Hello guys, welcome to yet another episode of Khao Pio Khisko powered by Cooking with Ketan। आज हम हैं गुड़गांव के सेक्टर 65 के वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पे बहुत ही सारे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन और छोटे मोटे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे इस बहुत ही अमेजिंगली ब्यूटीफुली डिज़ाइन प्रॉपर्टी को आगे और अच्छे से। तो फाइनली वी हैव लैंडेड अप एट पपाया मॉडर्न एशियन रेस्टोरेंट और हमने ऑर्डर किया है एक क्रिस्पी कॉर्न कर्ड एज वेल एज नासी गोरैंग एंड एक्जॉटिका टू ड्रिंक। दैट्स व्हाट वी हैव बीन सजेस्टेड हियर। सो क्विकली लेट्स टेस्ट इट एंड गिव यू अ रिव्यू कि कैसे हैं इनके ये डिशेस और इनकी ये मॉकटेल। We have our crispy corn curd and let me see how it tastes. I don't know what they have served this with. So this is mango relish and it's really relishing. अब ये try करते हैं। Just look at this. It simply melts in your mouth. It's very crispy outside. बहुत ही करारे हैं बाहर और अंदर एकदम सॉफ्ट gooey सा टेस्ट है, सेवरी है
एंड विद दैट मैंगो relish, बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा एक बैलेंस्ड सा टेस्ट आ रहा है. मस्ट ट्राई. तो नेक्स्ट वी हैव एक्सोटिका एंड लेट मी stir this a little. Oh, this drink is quite tall. ऑरेंज जूस है और क्रैनबेरी है साथ में और बहुत ही टेस्टी है, बहुत रिफ्रेशिंग है, रियली नाइस. यहाँ आ गया है हमारा नासी गोरांग और ये ऑल नॉनवेज डिश है. तो मुझे हेल्प करने जा रही है इसके रिव्यू में मेरी वाइफ पूजा. Hi everyone, this is chicken roll hut. Now let's taste it. So how does it taste, पूजा? कैसा है? It's different. Doesn't taste like chicken, but it's good. Taste like what if not chicken? Oh, it tastes like chickens now. Okay. It has a good aftertaste? Yes. Okay. We will taste the rice now. So the fried rice is good. Just like I tasted in Indonesia last time. It's having the same taste. So I will say good. Let's try the prawn fritters. I got the crunch sound. It's very crunchy and tasty too. We have some. Is it oily? No. And we have certain tomato sauce on it, which makes it more delicious. Now we will try my best portion, that is the prawn. Let me show you the prawns. Stuffed prawn है ये. Pooja is having a hard time. How's it? Very tasty. Prawn is always tasty. The No? outer part is crunchy and the inner part melts in your mouth. So I will give this food a super thumbs up. Okay. And what do we have here? We have Sitting egg. on the top. We have egg over here. We have chicken, prawns. So it's a complete non-veg dish. Taste the egg and let me know. That's pretty like egg, nothing extraordinary. So guys, ये था हमारा नासी गोरांग, एक्सोटिका and crispy corn curd का review. The cost for one exotica, one crispy corn curd, one nasi goreng is 1796, and this is what they have given us as mouth freshener, freshly made chocolates. So let me try one of these. Just want to know if we had a good time. It was nice. So it's really nice. Refreshing, all was good. Yeah, it was really good and we really enjoyed the meal. Yeah. तो यहाँ मैं एंड करता हूँ अपना पपाया का व्लॉग और आप भी ज़रूर आएँ पपाया और ट्राई करें मॉडर्न एशियन डिशेस यहाँ पे. And do like, share, comment and subscribe on my YouTube channel. See you next time in a new vlog. Till then, eat tasty and stay happy.